Hello students, I am your teacher for this question. Question says, explain why sliding friction is less than static friction. फ्रिक्शन दो सरफेसेस की इरेगुलरिटीज़ की इंटरलॉकिंग के कारण होता है. जब इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगी तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, जब इंटरलॉकिंग कम होगी तो फ्रिक्शन कम होगा. स्लाइडिंग फ्रिक्शन में इंटरलॉकिंग होने के लिए टाइम बहुत कम मिलता है, इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होता है. सो वी कैन से sliding friction is always less than static friction because two sliding objects find less time to get interlocked. Against each other's irregularities of surfaces. So that is the explanation for this question. Thank you.